The topic we are going to discuss about is reaction kinetics, and the subtopic is reaction kinetics. Let's discuss first what is reaction kinetics. It is defined as the studies that are concerned with the rates of chemical reactions and the factors that affect them. These studies throw the light on mechanisms of reactions. So reaction kinetics में basically हम तीन चीज़ों के साथ deal करते हैं: rates of chemical reactions, factors that affect the rate of chemical reaction, and mechanism of reactions. Here we have a practice MCQ. Which of the following reactions are generally slow? And the options are neutralization reactions, explosive reactions of O2 and H2, organic substitution reactions, photochemical reactions. And the correct option is organic substitution reactions. Let's see what is rate of reaction. During a chemical reaction, reactants are converted into products. So the concentration of the products increases with the corresponding decrease in the concentration of reactants as they are being consumed. This situation is explained by the graph in which reactant A is changing irreversibly into product B. जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है विद पैसेज ऑफ टाइम, वैसे ही जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाती है क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे होते हैं. सो इस रिलेशन को हम एक ग्राफ के जरिए देखते हैं. हाउ? सो हियर वी हैव अ ग्राफ जिसमें वी हैव two different curves. One curve is denoting reactants जो कि purple color में, and second one is green जो कि products को कर रही है denote. So reactants की जो curve है वो पहले बहुत steep थी क्योंकि reactants की concentration ज़्यादा थी. जैसे जैसे reaction जो है वो proceed कर रहा है वैसे वैसे जो reactants की curve है वो decrease हो रही है. Time axis के साथ वो parallel हो जाएगी, एक time आएगा. और उसी तरह से जो प्रोडक्ट्स की है कर्व वो पहले जीरो पे थी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो जो कर्व है वो इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और एक टाइम आएगा जब वो भी टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी, लेकिन जो वाई एक्सिस के साथ उसका रिलेशन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं 50 हैं जबकि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हमारे पास जीरो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. सो जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है तो हमारे पास जो कर्व्स होती हैं वो दोनों स्टीप होती हैं. चाहे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है वो भी बहुत स्टीप कर्व होती है, और चाहे जो प्रोडक्ट्स है वो इंक्रीज हो रही होती हैं उस जो कर्व में भी खासा स्टीपनेस होती है. सो व्हाट वी हैव बेसिकली कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ, the slope of graph for reactant or the product is steepest at the beginning. This shows a rapid decrease in the concentration of the reactant and consequently a rapid increase in the concentration of the product. As the reaction proceeds, the slope becomes less steep, indicating that the reaction is slowing down with time. Reaction के start पे जो reactant के लिए slope है या product के लिए slope है वो steepest होती है. That shows कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत जल्दी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें रैपिड इंक्रीज होता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, रिएक्शन प्रोसीड करता है, वैसे वैसे जो रिएक्शन रेट है वो स्लो होता जाता है. इसीलिए जो कर्व में चेंजेस होते हैं, जो कर्व है वो लेस स्टीप होना शुरू हो जाती है. Moreover, it means that the rate of a reaction is changing every moment. So we can say कि reaction का जो rate है वो constant नहीं रहता. Start में वो बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी reactants में product में convert हो रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो decrease होना शुरू हो जाता है. The following curve for reactants should touch the time axis in the long run. जो reactants की curve है
वो एक टाइम आएगा जब वो टाइम एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी. सो दिस इज द स्टेज ऑफ कॉम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन. जब रिएक्टेंट्स की कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, दैट वुड बी द स्टेज ऑफ कॉम्प्लीशन ऑफ अ रिएक्शन. इन दिस ग्राफ यू कैन सी अगेन, ये कर्व जो है वो रिएक्टेंट्स की है. स्टार्ट में बहुत स्टीपेस्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी. सो जिस पॉइंट पे ये टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो रही है, दैट वुड बी द टाइम ऑफ कंप्लीशन. और जो प्रोडक्ट्स की कर्व वो भी स्टार्ट में स्टीपेस्ट थी, ठीक है, बहुत जल्दी जो है प्रोडक्ट्स बन रही थी. बट एक टाइम आया जब ये भी पैरेलल होना शुरू हो गई, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट था वो टाइम के साथ साथ जो है वो स्लो होना शुरू हो गया. So how we basically define the rate of reaction? The change in concentration of a reactant or a product divided by time taken for the change. So equation is rate of reaction equals to change in concentration of the substance, either reactant or product, divided by time taken for the change. Next are the units for the rate of a reaction. Concentrations are expressed in mole per decimeter cube. टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं. सो यूनिट्स फॉर रेट ऑफ रिएक्शन आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. फॉर गैस फेज यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर यूज्ड. सो रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स होंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम के यूनिट हैं सेकेंड्स. सो इट वुड बी मोल डेसीमीटर क्यूब per decimeter cube per second. Let's discuss the relation between rate and time. It follows from the graph that the change in concentration of a reactant or product is much more at the start of reaction and then it decreases gradually. ये हम ग्राफ में देख चुके हैं कि either प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, उसमें जो स्टार्ट में जो चेंज आता है वो बहुत स्टीप होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे जो रिएक्शन रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है. सो द रिएक्शन रेट डिक्रीजेस विद टाइम. इट नेवर रिमेन्स यूनिफॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. इट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली अंटिल द रिएक्शन ceases. Let's discuss a question. Units for reaction rate are, and the options are mole decimeter cube per second, mole per decimeter cube per second, per mole decimeter second, per mole per decimeter cube second. And the correct option is mole per decimeter cube per second. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well, and thank you so much.